Welcome to my channel Imperial Academy. My name is Girish and today I am going to discuss with you class 7 chapter number 4 simple equation textbook NCERT exercises 4.2 question 1. See, the instruction is give first the step you will use to separate the variable and then solve equation. That means हमें यहाँ जो क्वेश्चन है ए टू एच उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, बट जब हम सॉल्यूशन करें तो हमें स्टेप भी लिखने हैं कि व्हाट आर द स्टेप यू हैव यूज्ड टू सेपरेट दिस वेरिएबल. लेट मी स्टार्ट विथ ए, दैट इज x minus 1 is equal to 0. टू सेपरेट द वेरिएबल दैट मीन्स हमें यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 1 है उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रखना है, ये माइनस 1 को यहाँ से रिमूव करना है. एक बात याद रहे, जब भी आप इक्वेशन का सॉल्यूशन करो, आप जो भी इसमें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ अप्लाई होगा. तो यहाँ अगर मुझे इस माइनस 1 को यहाँ से रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? सो व्हाट आई कैन डू कि मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में प्लस 1 कर दूंगा तो यहाँ माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा एंड दिस हियर वी गेट 0 प्लस 1 1 और यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो हमें मिल जाएगा. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इट टू ऐड 1 बोथ द साइड. तो हियर वी सेड एडिंग 1 at both side. So what we get it, x minus 1 plus 1 is equal to 0 plus 1. प्रीवियस क्लास में जब आप उसको पढ़े तब आपने उसको बैलेंसिंग मेथड समझा होगा कि इनसाइड ऑफ बैलेंसिंग मेथड हम दोनों तरफ इसी तरह से चेंजेस करते. तो हियर x is equal to 1 which is required solution, which is required solution. I hope आपको समझ में आया होगा. Our equation is x minus 1 is equal to 0. हम इसको डायरेक्ट भी ट्रांसपोजिंग मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बट एज इट इज इंस्ट्रक्शन दैट गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल. तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आपने जो प्रोसेस किया वो आपको लिखना था. व्हाट वी हैड डिड इट हियर कि मैंने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 1 ऐड किया. तो फर्स्ट आई हैव रिटन एडिंग 1 एट बोथ द साइड, सो आई गेट x is equal to 1 and which is my required solution. Let me move on to the second sum b, that is x plus 1 is equal to 0. Here the x minus 1, here the x plus 1. तो यहाँ हमने ऐड किया तो what can be done at here? Subtracting 1 from both the sides. So what we get it, x plus 1 minus 1 is equal to 0 minus 1. Here the plus 1 minus 1 0, so we get x. Here the 0 minus 1 is equal to minus 1, which is required solution, which is required solution. This is how you get the answer. Let me move on to the next sum, that is C1. The C1 is x minus 1 is equal to 5. To remove this minus 1 from left hand side, what can I do? To add. तो इससे आपको सिंपली समझ में आया होगा कि अगर नंबर यहाँ पे वेरिएबल के साथ माइनस के रिलेशन में है तो हमें प्लस करना है, और अगर वो प्लस के रिलेशन में है तो हमें उतने ही नंबर माइनस करना है. तो हियर व्हाट कैन आई डू? एडिंग 1 at both the side. So what I get it, x minus 1 plus 1 is equal to 5 plus 1. So I get x is equal to 6, which is required solution. Move on to the next question D, that is x plus 6 is equal to 2. Here what we need to do? Subtracting. So we'll write down subtracting
6 from both the sides. So here we get x plus 6 minus 6 is equal to 2 minus 6. So 6 6 0, that is x is equal to 2 minus 6 minus 4, which is required solution. Now move on to the e. Next sum is e, which is y minus 4 is equal to minus 7. So these all are the sums related to the one particular method. Look at this, y minus 4 is equal to minus 7. One thing you need to remember, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर माइनस के रिलेशन में तो हमें ऐड करना होगा, अगर प्लस के रिलेशन में होता तो हमें सबट्रैक्ट करना होता. तो हियर वी एडिंग plus 4 both the side. So here we get minus 4 plus 4 is equal to minus 7 plus 4. So here it is y is equal to plus minus minus 7 minus 4 3, bigger number sign minus 3, which is required solution. Likewise f, which is y minus 4 is equal to 4. So here I am going to do adding 4 both the sides. So I get y minus 4 plus 4 is equal to 4 plus 4. So here the y is equal to 8, which is required solution. Understood? Now move on to the last two sums, that is g and h. So in the g1, the question is y plus 4 is equal to 4, and the h1 is y plus 4 is equal to minus 4. So let me see that here first we need to subtracting 4 from both sides. So what we get it, y plus 4 minus 4 is equal to 4 minus 4. Here we get the y is equal to 0, which is required solution. Likewise here also subtracting 4 from both the sides. So we get y plus 4 minus 4 minus 4 minus 4. So you get y is equal to minus 8, which is required solution. So this is how you can solve exercises 4.2 question 1. The main concept which is you learn in this is कि अगर वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्टेड के रिलेशन में है, यानी कि x माइनस 1 और हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो हम उसमें उतना ही नंबर दोनों तरफ ऐड करेंगे. अगर कोई नंबर उसके साथ प्लस के रिलेशन में है, तो जो नंबर है उतना ही नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आई होप आपको इस वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा. थैंक यू एवरीवन.